मेरा आदरपूर्वक प्रणाम. Welcome again for this Japa talk. Start with a small prayer. Om Ajnanaatimirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manoveeshtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Prabhupada Kadamaya Dhanti Swapadantikam. Namah Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. Welcome again for this Japa talk. So in today's Japa talk, I will talk about the glories of the holy name. आज इस जपा टॉक में हम हरिनाम का महिमा के बारे में सुनेंगे. एक कथा का मूल्य. तो एक कथा है गौरंग चैतन्य महाप्रभु गौरंग प्रभु जी ने like how Gauranga gave this holy name to a washerman, a धोबी को. गौरंग एक कथा है चैतन्य चरितामृता में जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी ने एक धोबी को हरिनाम देते हैं. तो वहां पे हम हरिनाम का महत्व को समझेंगे इस कथा का मूल्य से. So एक दिन था जब Gauranga was along with his all his disciples. He was actually going towards the river side. So ऐसा था कि गौरंग जी सभी अपने भक्त जन के साथ एक नदी के किनारे जा रहे थे. तो जब वो उधर पे पहुंचे तो उधर एक धोबी को देखा जो बहुत ही श्रद्धापूर्व से अपना काम कर रहा था. तो गौरंग प्रभु बहुत ही दयालु है. तो बहुत दया से इस धोबी के पास पहुंचते हैं और उसे बोलते हैं कि आप एक बार हरि बोल बोल सकते हैं क्या, ऐसे पूछते हैं. तब धोबी बोलते हैं कि देखता है, गौरंग प्रभु को देखता है, महाप्रभु को देखता है और देखने पर वो समझता है कि ये सन्यासी है और बोलने लगता है कि महाप्रभु आप तो एक सन्यासी है और मैं बहुत ही आई एम वेरी पुअर पर्सन. मेरा मेरा पास कुछ नहीं है. तो आई एम वेरी पुअर पर्सन, सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव फॉर यू. मेरा पास कुछ भी नहीं है जो अब मैं आपको दे सकता हूँ, ऐसा बोलता है. He thinks Chaitanya Mahaprabhu as an ordinary sannyasi. He tells like this and he continues to keep on washing his clothes, the clothes. And then Chaitanya Mahaprabhu बोलते हैं कि Gauranga is telling like मुझे आप कुछ भी नहीं दीजिए, सिर्फ आप एक बार हरि बोल बोल दीजिए, बोल के बोलते हैं. तो ये बोलने के बाद फिर से ये धोबी बोलने लगता है कि मैंने बोला था ना आपको, आप एक सन्यासी है, मुझे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा को, पर मैं तो बहुत गरीब हूँ. मैं ये हरि बोल बोलने के लिए अपना काम छोड़ के ये हरि बोल नहीं बोल सकता, मुझे मेरा पास उतना समय नहीं है, बोल के बोलता है. तो फिर से गौरंगा महाप्रभु doesn't leave him. Then he again says that okay, आपका काम मैं कर लेता हूँ, तो आप मेरे लिए सिर्फ एक काम कीजिए, हरि बोल बोलिए, बोल के बोलते हैं. तो ये जब जो भी सुनता है कि इतना बड़ा सन्यासी ऐसा बोल रहे हैं कि वो मेरा काम कर लेंगे और मुझे सिर्फ हरि बोल बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो ये एक्सेप्ट्स दैट ऑफर एंड देन ही चैंट्स वंस हरि बोल. देन अगेन गौरंग महाप्रभु से एक बार बोल दिया है और फिर से दो बार से दोबारा बोलना है. 2 times यू टेल हरि बोल हरि बोल. Then again the washerman says, okay, I will accept it, bolke. He says, Hari Bol, Hari Bol. So once he says Hari Bol 3 times, immediately the fire of devotion actually ignites within heart. ये भक्ति का भाव उसका हृदय में आ जाता है और वो फिर से बार बार हरि बोल he actually starts chanting continuously because that love, the devotion got gets ignited within his heart. The more and more he keeps on chanting, he becomes so ecstatic. He forgets everything and just actually becomes blissful in dancing and chanting the holy names of the Lord. So as he keeps on dancing and chanting the holy names of the Lord, his wife actually comes with food and sees his husband.
actually dancing here without knowing what is happening in the surrounding. So जब वो देखते हैं, उनका पत्नी देखते हैं, तो घबरा जाते हैं कि क्या हो गया है इस मनुष्य को. तो she actually tries to stop him, but he doesn't actually respond to her. तो उनके वाइफ समझते हैं कि इसे कुछ भूत प्रेत लग गया है, तो इसीलिए ऐसा नाच रहा है. Immediately she goes and actually calls all the villagers, and all the villagers, सभी गांव के लोग लाइक भयभीत हो जाते हैं और आते हैं देखने के लिए. तो सभी लोग आते हैं तो देखते हैं कि ये धोबी अच्छे तरह से नाच रहा है और हरि बोल बोल रहा है. उसे बाहर में जो भी हो रहा है उसका पहचान ही नहीं है. तो सभी लोग घबरा जाते हैं कि इसको क्या भूत लग गया है क्या बोल के. दे एक्चुअली वंडर, नोबडी इज एवरीबडी इज हेसिटेंट टू गो नियर हिम. तो उसमें ऐसे एक धैर्यशाली था, तो वो जाके ये धोबी को पकड़ता है. तो जब वो धोबी को पकड़ता है, तो दैट इफेक्ट ऑफ डिवोशन वाज सो स्ट्रांग विद इन दैट washerman that it actually ignites that devotion within the heart of this person who touches him also, and immediately he also starts chanting the holy names of the Lord. And like that, like whoever got in contact with the other person who was chanting the holy names of the Lord, everybody started actually chanting the names of the Lord and dancing in ecstasy. So all these things, when it was happening, Chaitanya Mahaprabhu was seeing all these things happening and how people were getting attracted, getting connected, and everybody was chanting the holy names of the Lord. So like this, when Gauranga Mahaprabhu saw this, he actually became very happy, and then being self-satisfied, he saw all the things, observed what was happening, and then with a smiling face, he just left that place, being happy, seemed happy that all the village peoples were actually infected by the love of devotion of Godhead. So similarly, Prabhupada also says that this devotion is so strong that if one is actually very sincere, the process of chanting is so simple that if one actually takes it very sincerely and chants the holy names of the Lord, then actually one can spread this love of Godhead for the whole world. Just like Prabhupada every time gives an example in the lecture, that the example of the iron rod. So when the iron rod is nicely heated, the iron rod actually becomes red hot, and as the iron is kept on heating, the iron rod becomes like a fire. So when that fire is actually brought in contact with anything else, the other thing also becomes fire. So this story is an example of what Prabhupada says. So similarly, if we want to actually preach the message of the Godhead, then we actually should be like a iron rod. Should be our sadhana is like the fire. So if our sadhana is very strong, and if we are able to chant the holy names of the Lord with sincere and devotion, then we actually will become fire, and wherever we go and preach, they also will take it easily. So that's what we are seeing, what is happening. So many of them are taking to the process of chanting. So like this is what actually Gauranga Mahaprabhu did, and in Chaitanya Charitamrita, we see that happen to the washerman and the entire village. So similarly, we also should chant the holy names of the Lord very sincerely, and nicely hearing the holy names of the Lord. So when we do that, we become that devotion gets ignited within our heart, and then we can actually, when we preach, then people also will take to the process of chanting very. So I'll stop here in the interest of time.